Good morning, children. Welcome to Hindi first language class. Previous class we did all the exercise of lesson number 12. Hope you all have written in your classwork and learned it. Have you written? Children, please write daily what I give you to write and learn. Do it regularly. Okay? Now, today we will start new lesson. कितने कौवे. You all read after me. Repeat after me. महाराज कृष्णदेव तेनालीराम की चतुराई से बहुत प्रसन्न थे. महाराज कृष्णदेव तेनालीराम की चतुराई से बहुत प्रसन्न थे. एक दिन राजा ने तेनालीराम से अटपटा सा सवाल किया. तेनालीराम, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? तेनालीराम, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? क्या तुम गिनकर बता सकते हो? क्या तुम गिनकर बता सकते हो? क्यों नहीं महाराज, बस 2 ही दिन में मैं गिनकर बता दूंगा. क्यों नहीं महाराज, बस 2 ही दिनों में मैं गिनकर बता दूंगा. 2 दिन देखते ही देखते बीत गए. 2 दिन देखते ही देखते बीत गए. तीसरे दिन दरबार में सभी लोग तेनालीराम का इंतजार करने लगे. तीसरे दिन दरबार में सभी लोग तेनालीराम का इंतजार करने लगे. तेनालीराम के आते ही महाराज ने पूछा. तेनालीराम के आते ही महाराज ने पूछा. तेनालीराम, क्या कौवों की गिनती हो गई? तेनालीराम, क्या कौवों की गिनती हो गई? बताओ तो, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बताओ तो, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? महाराज 1,70,504. महाराज 1,70,507. 504. क्या सचमुच गिनती करवाने पर यदि कौवों की संख्या
कम या अधिक हुई तो क्या सचमुच गिनती करवाने पर यदि कौवों की संख्या कम या अधिक हुई तो मेरी गणना बिल्कुल सही है। मेरी गणना बिल्कुल सही है महाराज। फिर भी दोबारा गिनती करने पर यह संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। फिर भी दोबारा गिनती करने पर यह संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। यह सुनकर महाराज की भौवें तन गई। यह सुनकर महाराज की भौवें तन गई। दरबारियों को लगा कि अब तेनालीराम की खैर नहीं। दरबारियों को लगा कि अब तेनालीराम की खैर नहीं। महाराज ने ऊंचे स्वर में पूछा। महाराज ने ऊंचे स्वर में पूछा, यदि तुम्हारी गणना बिल्कुल सही है तो फिर कौवों की संख्या कम या ज्यादा कैसे हो सकती है? यदि तुम्हारी गणना बिल्कुल सही है तो फिर कौवों की संख्या कम या ज्यादा कैसे हो सकती है? देखिए महाराज, यदि पड़ोसी राज्य से कौवे के रिश्तेदार हमारे राज्य में मिलने जुलने के लिए आए हो तो कौवों की संख्या बढ़ सकती है। यदि पड़ोसी राज्य में हमारे कौवे के किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई हो तो हमारे राज्य के कुछ कौवे उस राज्य में अफसोस करने के लिए जा सकते हैं। ऐसे हालत में कौवों की कुछ कम या अधिक कौवों की संख्या कुछ कम या अधिक भी हो सकती है। देखिए महाराज, यदि पड़ोसी राज्य से कौवों के रिश्तेदार हमारे राज्य में मिलने जुलने के लिए आए हो तो कौवों की संख्या बढ़ सकती है। यदि पड़ोसी राज्य में हमारे कौवों के किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई हो तो हमारे राज्य के कुछ कौवे उस राज्य में अफसोस करने के लिए जा सकते हैं। ऐसे हालत में कौवों की संख्या कुछ कम या अधिक भी हो सकती है। यह सुनकर महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े और दरबारी भी अनमने से हंस दिए। यह सुनकर महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े और दरबारी भी अनमने से हंस दिए। So
We have read this lesson. I will explain you. You would have heard this story also. Anyway, I will explain you. Here, the king is Krishna Dev, and the king was very happy. Krishna Dev king was very happy with Tenali Ram. Tenali Ram's cleverness. As he was sitting one day in his court, he asked one confusing question to Tenali Ram. What he asked? तेनालीराम, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? क्या तुम गिनकर बता सकते हो? Yes, he asked Tenaliram that how many crows are there in our state. So, can you count and tell me the exact number? Then see Tenaliram, what he says? Why not king? Why not sir? He said to king that why not? I can count and tell you. Just you give me 2 days to count the crow. Like that, 2 days pass on. Third day in the court, everyone was eagerly waiting for Tenali Ram to come to the court. As soon as Tenali Ram come to the court, King Krishnadev asked him, Tenali Ram, have you counted the number of crows? Now tell me how many crows are there in the state. Then Tenaliram says 1,70,504 crows are there. 1,70,504 crows are there. On saying this, king said, is it correct? If I tell them to count again, the number will become less or more. Excuse me. If I tell to count the number of crows in the state once again, will it be less or more? If it come less or more, then
Then he asked again, once again, क्या सचमुच गिनती करवाने पर यदि कौवों की संख्या कम या अधिक हुई तो? Yes, he says, if I tell them to count again the number of crows, if there will be any more or less, then what will you do? Then Tenali Ram, what he says? My calculation is perfect. फिर भी, but even if you count again, it may be sometime little less or sometime it may be little more. On hearing this, king becomes serious and in a serious note, he looks at the Tenali Ram, seeing his frown face, these all courtiers, many people were sitting in the court, they were thinking that now Tenali Ram is going to get nice scolding and all. Then king in a loud voice asked, if your counting is perfect, then how come the number of crows will increase or decrease? Then what Tenali Ram says? Tenali Ram said to the king, see Lord, if from neighboring state some relatives of the crows come to our state to visit their relatives in this state, then the number of crows will increase. And if anyone relatives in the neighboring state may die at that time, to console their relatives, some of our crow from this state may visit to the other state. In that condition, the crows will be less in our state. So this is the reason that if you again count, it may increase or decrease. On hearing this, the king started laughing, and along with him, all the courtiers started laughing. Why they laughed? Because can we count the crow like that? No, we cannot count. But with his cleverness, he just said one number and he satisfied the king's mind. And king also understood that he is just
giving the answer without any counting, because we cannot count crow. Crow will sit in one place? No. It will be flying from one place to other place. So how we can count? Cannot count. Okay, children? Have you understood the lesson? See in the picture also, it is nicely given in the textbook. Pictures. How King is saying, what Tenali Ram is saying. Okay, you just read this lesson many times so that your reading will become good and you will enjoy the lesson. Okay? Now we will do Shabdarth. Shabdarth in the next page. Difficult word, Shabdarth. Meaning in English. Repeat after me. Shabdarth. Chaturai, cleverness. Chaturai, cleverness. Prasanna, happy. Prasanna, happy. Atpata, confusing. Atpata, confusing. Darbar, royal court. Darbar, royal court. Intajar, wait. Intajar, wait. Ganana, counting. Ganana, counting. Bhavetanna, to frown. Bhavetanna, to frown. Darbari, courtiers. Darbari, courtiers. Rishtedar, relatives. Rishtedar, relatives. Afsos, karna, to feel sorry. Afsos karna, to feel sorry. Afsos karna, to feel sorry. 1,70,504 1,70,504 1,70,504 1,70,504. Yes, you read the lesson and Shabdarth you write in your classwork. Okay, children? Write it in your classwork neatly with heading, lesson name, heading, and learn it. Okay, children? Once again, I will read the Shabdarth. Chaturai, cleverness. Prasanna, happy. Atpata, confusing. Darbar, royal court. Intajar, wait. 1,70,504 1,70,504
504. Ganana, counting. Ganana, counting. Bhavve Tanna, to frown. Darbari, courtiers. Rishtedar, relatives. Afsos karna, to feel sorry. Afsos karna, to feel sorry. Yes, children, for today, this much is enough. Children, I have sent FA2 portion and model lesson 1 and 2. You start learning and practice in your rough notebook. Okay? Yes, children, have a nice day. Thank you.